is the most scathing criticism by the highest court of our land on the collective failure of governance for which Delhi is paying the price. As toxic air grips the national capital, a thick layer of haze has engulfed it. Today, a two-judge bench of the Supreme Court has lashed out at the AAP Sarkar in Delhi and neighboring states. In a stinging criticism, the court has said that this is like committing murder. It's warned the state to sort out things immediately, and this shouldn't happen next year. It has also warned Punjab, UP, Haryana and Rajasthan to stop playing this parali burning, saying that we don't know how you do it, it's your job. The Supreme Court has also said policies can't depend on which ruling parties where, and has asked if the same party is there in Delhi and Punjab, then what's the issue? On paper, however, both Punjab and Delhi governments have listed the steps that they've taken to stop pollution. While the Delhi government has claimed that 3,200 cars checked daily for pollution, Punjab says that 405 reduction in parali burnings per day. But after the scathing comments from the apex court, the government says that they will study the order and find solutions to tackle pollution. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और एनवायरनमेंट विभाग के अधिकारियों के साथ उसकी तैयारियों को लेकर के बैठक की है। उसके बाद अभी हमने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। मेरे ख्याल से अभी इन सभी बिंदुओं पर ही तुरंत अभी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की है और उन सभी पक्षों को, सभी सरकारों को अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया था। सभी लोगों ने अपना एफिडेविट फाइल किया है और उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे रहा है। अभी मेरा स्टैंड यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ रहा है उसको सभी सरकारों को फॉलो करना चाहिए। हमारी सरकार भी उसको फॉलो करेगी। लगभग 10,536 कम है पिछले साल के और जो 35% रिडक्शन हमें रिकॉर्ड की है 6 तारीख को। पर ये रिडक्शन कुछ दिनों में काफ़ी पहले कम थी, 55 भी थी, 59 तक भी गई, 50% पे रही। तो ये कुछ दिनों में कुछ बर्निंग के केसेस बढ़े हैं जो कि चिंता का विषय है। पर हमारी पूरी जो टीम्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ग्राउंड पे जाके वो जो हमारा एक्शन प्लान है उस हिसाब से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ आने वाले दिनों में जो हमारा टारगेट है अभी -50% को अचीव करने का, तो उसको हम प्राप्त करने की पूरा प्रयास और कोशिश जारी है। The BJP was quick to lash out at the AAP Sarkar for its criminal negligence, while its India bloc partner, the Congress, also joins in to bash the Kejriwal Sarkar. Listen in. मैंने आज मीटिंग की है और इसके पहले भी लगातार हमारी मीटिंग होती रहती है। जो हमारे वायु से प्रदूषण का जो CAQM है वो रोज रेगुलर दिन में 2 बार मीटिंग करते हैं और रिपोर्ट भी भेजते हैं। जहाँ तक आज पिछले 20 अक्टूबर को हम लोगों ने मंत्री स्तर पर बैठक की थी। सुप्रीम कोर्ट का चिंता स्वाभाविक है और जो उन्होंने सलाह दी है कि इस पर कहीं भी राजनीति ना होना चाहिए और पराली तुरंत जल्द बंद होना चाहिए, ये स्पष्ट दिशा निर्देश हम लोगों ने इस आशय का जारी भी किया है। देरी नहीं बरती गई है, ये एक तरह से अपराध किया गया है। जिस तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। एक तरफ जनता त्रस्त है, गैस चैम्बर में रहने को मजबूर है, इन्होंने अपने दायित्वों को नहीं निभाया। कहाँ है स्मोक टावर केजरीवाल जी आपके? कहाँ है वो केमिकल जो आप कह रहे थे हम डाल देंगे, पराली लोग नहीं करेंगे, खाद बन जाएगी? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि कृत्रिम वर्षा का तमाम दावे किए गए, तमाम देशों में होती हुई है, उसके लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? But do you believe these claims? Times now gets you ground reports from Punjab which show rampant parali burning. The Supreme Court has taken
pollution problem very seriously, and a lot of points are being raised by the apex court saying why the stubble burning is still going on in the various states, and the Supreme Court has already pulled up the state government and specifically Punjab government why they are not able to put a cap on the stubble burning cases which is happening in the state of Punjab. We are showing these visuals from the ground. What is happening at this point of time? Stubble burning is still continuing in the state of Punjab, despite the Punjab government has been claiming they are providing all the equipment to the farmers so that there should be less stubble burning. But what we can understand and what we are showing at this point of time, the stubble burning is still continuing. The state government has also given an affidavit in the apex court where they had claimed there is less cases which has been reported this year as compared to last year, but we are showing this picture that stubble burning is still going on. And if we can talk about the farmer, and if we can talk about the farmer side also, the farmers say they are not able to get the equipment and they are not able to get the assistance from the state government, and that is one of the reasons why they are forced to continue this stubble burning. As always, the price of pollution and politics is being paid by the people of Delhi. Listen in to their plight. यहाँ की जो अभी पोल्यूशन की जो स्तर देखा जाए तो काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो काफ़ी बढ़ते जा रही है, जो कि खतरे के निशान के ऊपर जा रही है। हर दिन इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। स्मोक से आम पब्लिक सभी को प्रॉब्लम हो रही है, खासकर सुबह मॉर्निंग वॉक या रनिंग करने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आदमी की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है और ये आपको पूरे सिस्टम जो शरीर का है उसको भी खराब कर रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। इनफैक्ट सभी का बुरा हाल है। पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि ये पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, अब पंजाब वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ से नहीं आ रहा है। इट्स ऑल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड। It has been getting worse day by day, and it's not just a story of 1 year. It gets started every year at the end of the October. It's been my third year here, and before I moved into Delhi I was pretty worried about what I heard in the news media and from my friends. For last 2 years I hadn't seen this pollution to be this bad, but this year from late September or early October it had started to show that pollutions are on a very high level. Let's take this across to our guest. Joining us is Arima Sundaram, senior advocate. Shazia Ilmi, spokesperson of the BJP, is with us. Parvinder Singh, city political analyst who leans towards the Aam Aadmi Party, is also joining us. But before I get into the political debate, let's get a legal view to fully understand the import of what the Supreme Court has said. Mr. Sundaram, first of all, thank you for speaking to us here at Times Now. And let me begin by asking you, the Supreme Court has made some strong oral observations calling on the states of Haryana, Punjab and Rajasthan to stop stubble burning. Do you believe that this is something that was long overdue? Well, let's just put it this way. What the Supreme Court showed today was a cry of anguish and, an expression of its complete frustration over the clear inaction of what the governments are doing. Let's understand one thing. 3,230 fields were burnt in 1 day on 5th May. 17,000 fields have been burnt till now in Punjab. Now, it's all very well. Till now, the Aam Aadmi Party, which is governing Delhi, kept putting the blame on Punjab. But now the Aam Aadmi Party is in Punjab also. So what's happened to all the blame which was being put on the Punjab government for not doing anything? What did the Aam Aadmi Party government do in Punjab over this? Nothing. The fact of the matter is that unless there is serious government initiative, nothing at all will come about. Right. One oral observation has pointed towards the fact that the ruling party in Punjab and Delhi is the same, as you rightly mentioned, and the court has added that in a way you are affecting the health of the people. In a way, this is like committing murder, says the court. What do you make of this extremely harsh observation that has been made? Well, I think they were very well taken observations, very correct observations. After all, Article 21 promises you the right to life and liberty. It has clearly been held that clean environment is part of this right to life and liberty under Article 21. It is the duty of the state to protect it. And if the state does not do so and allows the kind of pollution today, which is almost fatal in many cases to people with breathing difficulties and other problems,
which otherwise will create breathing and other problems in people. The court is completely right. What is it? If not murder, it is definitely gross negligence and complete uncaring, non-acting to preserve the fundamental right of freedom of life and liberty. And finally, Mr. Sundaram, would it be amount to the contempt of court if indeed stubble burning continues and steps are not taken to stop it, in your view? I would say not only is it a contempt of court, I would go further. It is an affront. It is an affront. It is a failure in the state in taking care of the life and liberty of its citizens. It is gross negligence, not just gross negligence. I'll say it's culpable negligence in not taking action to protect the life and liberty of the citizens of the state. So it is far, far more serious than what it is made out to be. And I'm exceedingly glad that the court voiced very clearly and called a spade to say what this is and stop allowing these political games to override and trample on the citizens' fundamental rights. Mr. Sundaram, I'd like to thank you for joining us. Let me take this across to our guests for now, Shahzay Ilmi and Parvinder Singh Sethi. Parvinder Singh Sethi, this is tantamount to murder. इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिप्पणी क्या कोर्ट कर सकती है? और कहीं ना कहीं इट रेजेस अ सीरियस क्वेश्चन. जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब अरविंद केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर से सवाल पूछते थे. अब क्या हुआ सर? पिछले साल ही कहा था कि अब हमें 1 साल दीजिए. अब 1 साल आप सरकार में रह चुके हैं, तब भी पूरी तरह आप इस तरह की पराली को जलाने में विफल रहते हैं. क्या दिल्ली के आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है केजरीवाल सरकार को? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत सीरियस इशू है और इसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए. लोगों की, देश की जनता के स्वास्थ्य का मामला है. ये दिल्ली का मामला नहीं है, नेशनल इशू है. चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, चाहे अदर स्टेट्स हैं, वहां पे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. लेकिन पराली बर्निंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स. सर, केजरीवाल जी क्या कर रहे थे जब कैप्टन साहब से सवाल पूछ रहे थे? वो राजनीति नहीं थी. बात को पकड़कर बार उसको आप राजनीति नहीं मानते? जब केजरीवाल सवाल पूछ रहे थे कैप्टन अमरिंदर से 4 साल पहले, तब वो राजनीति नहीं. आप राजनीति करना चाहते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? तो सर सॉल्व करिए सर. आप विफल रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. सरकार, दिल्ली की सरकार यहाँ लोगों की आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो पराली जलाना टारगेटिंग आम आदमी पार्टी ओनली. Your motive is to targeting Aam Aadmi Party. When there is more than 100 AQI the rest of the year, then who is to blame, sir? Please बताइए. जनता किससे सवाल पूछे? Sir, let me speak. व्हीकल पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है. दिल्ली एक बिजनेस हब है. यहाँ हजारों लाखों लोग रोज बिजनेस के लिए बाहर से आते हैं और हरियाणा के अंदर 2000 ईंटों के भट्टे जो पूरा पोल्यूशन पोल्यूट कर रहे हैं. जैसे वहां पे 3000 व्हीकल्स हैं, कारखाने हैं, और वहां पे काले जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल व्हीकल्स हैं और बसेस हैं डीजल की. जो हरियाणा यहाँ से 10-20 किलोमीटर है, यहां से राजस्थान नजदीक है, लेकिन आप पंजाब जो 250 किलोमीटर है, वो भी एक फैक्टर है. उसको भी खत्म होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें सब फैक्टर्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी. अगर हमें इस सर ये इतने साल बाद ये बाकी फैक्टर्स क्यों याद आ रहे हैं? चाहिए ये इतने साल बाद इतने फैक्टर्स क्यों याद आ रहे हैं आपको? ये समझ नहीं आ रहा किसी को. आप जब बाकी साल में जब 100-200 की AQI होती है, तब आपकी एक्शन कहां रह जाती है सर? तब आपको ये सब क्यों नहीं याद रहता? और तब उस पर काम क्यों नहीं? हर साल सर्दी के समय क्यों याद आता है आपको ये सब? नहीं सर, हर साल अक्टूबर के महीने में पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ जाता है दिल्ली का, सबको याद आती है. आप बताइए ना, जो बीजेपी सरकार है उन्होंने कौन सी मीटिंग करी है? हाँ, विंटर सेशन को लेकर कौन से उन्होंने इसके ऊपर वो करे हैं? सेंट्रल सरकार की भी उतनी जिम्मेवारी है, स्टेट सरकार. सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वली टू ब्लेम. शाहज़ी, you have not covered yourself in glory. You have not fulfilled your duty according to Parvinder Singh Sethi. Please respond to him. So we just heard a lot of like dreams and dreams. I mean, if you were to translate it into paper, or it should be reams and reams of just nonsense. So when these people who are masters of agitation, when they fail to do any good administration, what do? They muddy the waters. They make it into a broader thing and make it a generalized thing. This is happening, that is happening. Now let's not get confused with any of this. None of this can be conflated. Why does it happen at this time of the year? There is stubble burning that happens in Punjab. That is because of the season of the kharif crop, and which is why this happens. Now, this is very basic.
We don't have to go further. Whether it's the NASA satellite data or the Supreme Court's clear words, we know that Parali burning has the highest in Punjab, highest in the sense that it surpasses the figures of UP and Punjab by almost more than 100 times. So that is what we're talking about. Those are real numbers that we're talking about. And that is what's choking Delhi to death and disease and respiratory illnesses and anguish at this point of time. Now, instead of making it about this, that and all just to cover up and say, oh, politicians are like this, politics, no, there's a very clear rule. There is a transport ministry in Delhi, there is an environment ministry and an environment minister in Delhi. There is a whole government there in Punjab. And what do these two useless CMs do? They go around all over the countryside asking for votes, knowing very well that Delhi needs them, and this should have been planned at least a month or 3 months in advance. And let me tell you more. Forget what Supreme Court has said. That is a clear indictment of what has happened. Second point that I want to make today, and I want to give you figures, is today that the mayor called upon the MCD of Aam Aadmi Party and asked for sprinklers. Do you not think that this could have been anticipated and could have been done? At least in MCD, when BJP was looking after MCD, there were water sprinklers in every area. Now that has not been done. Gopal Rai is now in a huddle calling for meetings. Is today the day to call for meetings? Or should have been done 6 months earlier? This has been going on for 9 years. And this time MCD is with Aam Aadmi Party and so is the Punjab government, Punjab state. So MCD, Punjab and all of Delhi. What are these excuses? And why is the Aam Aadmi Party not being able to solve it is a question that the BJP is asking, but incidentally it's also a question that the Congress is asking. It's a question that many are saying, and of course at the end of the day there are several questions. I'm going to request you both to stay with us. We're slipping into a quick break. We're going to come back and debate this threadbare in just a few minutes. Stay tuned. All right, let me take this right back, in fact, to Parvinder Singh Sethi. Parvinder Singh Sethi, before we went into the break, we were discussing the observations of the Supreme Court. Why do you think that the Supreme Court says that the ruling party in Punjab and Delhi is the same? And therefore, where is the problem is a question the Supreme Court is asking. इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है. ये सवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, सर. सर बिल्कुल बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा. और वहां पे पराली बर्निंग की जो घटनाएं हैं वो काफी रिड्यूस हुई हैं, लेकिन वो बिल्कुल खत्म करनी पड़ेंगी. वो सरकार का काम है. लेकिन आप देखिए ना, पराली बर्निंग से हरियाणा में पोल्यूशन नहीं हो रहा, पंजाब में नहीं हो रहा, दिल्ली में हो रहा है. ये वन ऑफ द रीजंस है. मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा. सर डाउनविंड स्टेट है दिल्ली, पंजाब से डाउनविंड स्टेट है. वहां जब हवा चलती है तो वहां की सारी स्मोक यहाँ आ जाती है. सर ये कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने, कई सारे वेदर एक्सपर्ट्स ने सारी जानकारी, हर साल यही चीज होती है और हर बार ये सवाल उठते हैं. अगर आप 150 जो हरियाणा के फायर्स हैं और 2500 जो पंजाब के फायर्स हैं, उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तुलना कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल फायर नहीं बंद किया जा रहा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है पंजाब में प्रॉब्लम का इतना ज्यादा सीरियस है कि दिल्ली में लोगों को चोक कर रहा है आज की डेट में. सर मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा. ये बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे रीजंस हैं, उनके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा ना. सर ये दिल्ली एक वीवीआईपी सिटी है. यहाँ देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और पूरे जो मंत्रालय रहते हैं उनकी. परविंदर जी, इलेक्ट्रिक बसेस कहाँ हैं? भारत सरकार अभी तक डीजल की गाड़ी रजिस्टर हो रही है दिल्ली में. नहीं, कौन करेगा ये सब? दिल्ली की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं करेगी ये सब? परविंदर जी, सिंपल सवाल आपसे. अगर यहाँ पे डीजल बसेस अभी भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस नहीं, तो क्यों नहीं हुए सर? और सवाल दिल्ली की पब्लिक यही पूछ रही है. जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया? सर बहुत सारी रीजंस हैं. विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता. इनके सेंट्रल सरकार लोगों की जान के ऊपर राजनीति कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ राजनीति कर रही है. कैसे पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, लोगों की जान को लेकर. Okay, Shazia, you are playing politics with the lives of people is his allegation. That's what I'm saying. You can't speak with them beyond a point, because this is all they know. Filthy, dirty politics. They don't know how to do work. They don't know how to be answerable. They have problems with everybody. They have been in power for so many years in Delhi, and none of that has worked. It is the same Kejriwal is to blame Captain Amrinder. What is the logic now? Now why isn't the center doing anything about it? Then they come. आपने क्या किया ये आप बताइए ना. आपकी सरकार ने क्या करा? So much.
You know, there's an expression कि कुछ समझ में जब नहीं आया तो रायता फैला. So central government ने क्या किया? Shazi Almi, he is asking you a question. What has the central government done to curb the crisis? The central government, I can read out a whole list of what the central government and CPCC is doing. But the fact is, this is what they want. They want you to ask me this question, and without them being accountable for what is happening. And I will not let them derail the fact. This is what the Supreme Court is saying. We have the figures with us. Why are we listening to these liars and crooks? Who are just crooks, you know, sitting there? No, but to be, I'm no way absolving them of their responsibility, but the court has also asked neighboring Haryana, Rajasthan, etc. to chip in. Apart from Punjab, it has also asked other states to chip in and prevent and reduce the kind of pollution that's taking place. Haryana should and UP should, but the fact of the matter is there's a direct cause and effect. Do you see that? There's a direct cause and effect. It happens every year. The same excuses are made, new excuses are made, but work is never done. Let them start with themselves as to what they have done. All right, ultimately the courts have spoken. What will the People's Court have to say on this? Because ultimately, if for 2 successive terms, this is an issue that cannot be resolved, then certainly at some level, the people of Delhi also have to think about what really is the status of the people who they have elected to govern themselves. I think that's a question that certainly people have in their minds, and it's a burning issue, to put it mildly, here in the national capital. Parvinder Singh Sethi and Shazi Almi, I'd like to thank you for joining us this evening.